very warm welcome to We Women Want. This is a special show for women, by women and celebrating women. On our show we'll have guests जो होंगे जो women achievers हैं, जिन्होंने खुद अपना नाम हासिल करा है, women of substance. इनको जागीर में नहीं मिला है, ना ये जैसे कि पॉलिटिक्स में ज़्यादातर डायनेस्ट होते हैं. ये अपने आप अपने मजबूत पे खड़े हुए हैं on their own hard work and we are going to be celebrating their success. और उनसे थोड़ी उनकी कहानियाँ सुनते हैं because आपने इन सब के नाम सुने होंगे, their brand names, their labels. लेकिन उनकी जो अंदरूनी कहानी है, कैसे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, उनकी क्या पसंद है, उनके क्या पर्सनल लाइफ में क्या क्या उनके हार्डशिप्स हैं, थोड़ा सा हम ये शो है जैसे कि आपको लगे बिल्कुल आप ही उनके साथ बात करें, जो आपके सवाल हैं वो मेरे पास हैं और वही हम उनसे बातचीत करेंगे. सो वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो. और साथ हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच. आज साथ हमारे साथ हैं रीना ढाका. शी इज़ अ वेरी वेल नोन नेम इन फैशन. आई थिंक फ्रॉम द लेट 80s 90s उन्होंने जब फैशन वाज नोन, जो इंटरनेशनल ब्रांड था, तो तब आई थी. उन्होंने इंडिया में बिल्कुल फैशन बनाया, एक्सेसिबल बनाया ताकि आप हम सब भी फैशन पहन सकें. उनको निकनेम उनका है डोना कैरन ऑफ द ईस्ट, लेकिन वो ईस्ट एंड वेस्ट का बड़ा अच्छा ब्लेंड करती हैं. और उनसे कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या डिफ़िकल्टी इंडस्ट्री में हुई और उन्होंने आज इस कब तक पहुँची, पर्सनल लाइफ में क्या था, सब उनसे हम बातचीत करेंगे. और हमारे साथ हैं अंजुल भंडारी. शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फैशन नेम. बॉलीवुड स्टार्स काफ़ी उनके जो आप बिग स्क्रीन पे देखते हैं, दोनों के इनफैक्ट आउटफिट्स आर वॉर्न ओवर देयर. इनका सिग्नेचर है चिकनकारी वर्क, कामदानी वर्क. उनका ट्रेडिशनल अवध स्टाइल है वो, पर वो कहती हैं कि वो जो ब्राइडल वेयर भी बनाती हैं, पर जो पुराना स्टाइल था ना, हैवी ब्राइडल वेयर, द जरदोजी वर्क, दैट इज़ समथिंग शी इज सेइंग पीपल शुड वेयर लाइट वर्क. जो ब्राइड्स हो दे शुड बी मेड कंफर्टेबल. अ ब्राइड शुड ऑल्सो बी एबल टू dance at a wedding, should also be able to revisit those clothes and wear them again and again. So we have people who have brought fashion to us, both of you. Thank you so much for this conversation. Thank you. Thank you for having us over. No, it's a pleasure, and in fact, special occasion for me is to have you here. Reena, I begin with you first. You know, little bit through you, I want to go through the fashion history of India because you were one of the first movers, really. और उस समय male-dominated field में women ने कैसे आपने किया? Actually, जैसे मैं इन लड़कियों को कह रही थी कि I've been there. मैं बहुत ही छोटी थी when I started in fashion. I had just finished class 10th, and I came to Delhi from Chandigarh, and I started up with the polytechnic here. जब बारिश होती थी हमारी छुट्टी हो जाती थी पर जो भी है, it got us into that journey. And I did my graduation by correspondence, and I did the first work ever NIFT when NIFT came from FIT in New York. I did that first workshop. I also further went on to do pattern making and all that in लंदन एट ट्रेंट पॉलिटेक्निक. और मेरे फर्स्ट गुरु थे एक डेनिश डिज़ाइनर. उनका नाम था, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग, आई ऑलवेज कॉल्ड हिम इवन, बट इज़ आइवन, आई थिंक आइवन घुंडाल. और उनका ब्रांड था लिनिया एस. और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. उन्होंने सबसे बहुत ज़रूरी ये चीज़ सीखी कि ये बहुत फ्लीटिंग इंडस्ट्री है. आज हम यहाँ हैं, कल हम बस like dust particles before the wind बन जाएंगे, जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं. 30 साल कर दिया आपने यहाँ, so not so fleeting for you. Yeah, but what I'm saying is हर आदमी का एक पीक सा होता है. तो yes, मेरी बहुत बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं इस बात में कि फैशन का जो एक पीक था ना, वो मैं और मेरे कुछ कंटेम्प्रेरीज ने एक बार देखा था. अब एक नया पीक है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, न्यू टैलेंटेड लोग हैं. आई मीन द टैलेंट इज़ इमेंस. जैसे आपने कहा कि अब साड़ी को लाइट होना चाहिए, यू नो, इट इज़ माई बिगेस्ट डिज़ायर. पहले they were never wearing such heavy clothes, but now the brides want drama. They want the whole Bridgerton has gotten mixed up with our, as you call, Bridgerton brides. Yes, absolutely. Your beginning, you know, how did you get into fashion? You know, Priya, I belong to a very small town. In fact, I belong to a village. I come from a place called Rampur Maneharan, which is very close to Saharanpur in UP. तो रामपुर की धन्नो बैठी है हमारे साथ. As you may say, yes. True धन्नो. Yes, absolutely. She is a धन्नो. बहुत पटाखा है. तो we are in for a very So that's interesting where show. I started. I mean, that is where I was. That is where I belonged. So from there to Wellams, and from Wellams, I was only in the 10th. I did not even complete my 10th when I left Wellams, and I was married.
I was married at the age of 16 and a half. Oh my God. Yes. That man is still supporting you. Yes, though. there he is, very much supporting me. He's backstage. He's a very Absolutely been my backbone. And Yes, it started from there, but my father-in-law, my mother-in-law were very supportive always. They made sure I did my graduation after getting married, did everything after that. And because my mother-in-law was a very big social worker there, politically inclined, we used to visit these, centers where these women used to be, and that is where the love affair with chicken curry started. हाँ. It has been there since then. Then we moved to Delhi, my husband moved jobs, and then slowly and steadily kids started growing up, and I was very busy with the kids. So one fine day, when my daughter went into college, she turned around and she said, "Now what? What are you going to do?" I said, "What do you mean?" She says, "You need to find your life now. And it's never too late. You can start today." That somewhere hit it out. And I went back to those women. And I started my brand as a chicken curry brand from that day. तो आपका That is ब्रांड you have the weavers from the village, गांव से हैं सारे? जी बिल्कुल, मेरे कारीगर जो हैं वो सारे ही गांव में हैं। या आपका वर्क फ्रॉम होम का कल्चर तो कोविड में आया है, लेकिन चिकनकारी का वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मेरे ख्याल जब से चिकनकारी शुरू हुई है तब से है। तब से कर पहले वो नवाबों के घर बैठ के काम करते थे, फिर वो अपने घर में काम करते थे। एंड हमारा जो क्राफ्ट है वो बहुत वुमेन ओरिएंटेड है। हमारे जितने आर्टिसंस हैं वो सब औरतें होती हैं। आदमी चिकनकारी नहीं करते हैं, आदमी कामदानी करते हैं, लेकिन चिकनकारी नहीं करते हैं। सो समवेयर डाउन द लाइन इट्स अ वुमन सपोर्टिंग द वुमेन। बट रीना, अबाउट योर शादी, आई रिमेम्बर यू राइटिंग कि आपने खुद ही अपना लाइक्रा का डिजाइन किया था। यू मिक्स्ड क्योंकि यू डिड नॉट गेट व्हाट यू वांटेड। नो पर उन दिनों में फैशन कुछ था ही नहीं। इंडियन कपड़े नहीं बनाए हमने शुरू में। 90s में जब मैं आई तब हम लोग वेस्टर्न कपड़ों में गए, एंड आई वेंट इनटू अ मीडियम जो फैशन आती है, इसमें ना स्ट्रेच कपड़ा तब मिलता नहीं था। यहाँ हमको सब कुछ स्मगल जैसे करना पड़ता था। वो जो एक ग्रीन चैनल से हम चुपचाप से अपना लाते थे लाइक्रा इधर उधर से खोज खाज के। फिर एक दिन हम लाइक्रा के ओनर को इंडिया में ही मिले। अच्छा। उन्होंने वो कंपनी डुपॉन्ट किसी और को, आई थिंक नाउ अनदर, आई डोंट सडनली द फैक्ट इज नॉट कमिंग बट आई नो द नेम। वो एक तार है इलास्टिक की बेसिकली। तो मैंने फिर वो लाइक्रा हर चीज़ में घुसाया, खादी में घुसाया, जब भी वीविंग से हुआ उसमें घुसाया। मैं बहुत सारा लुधियाना में काम करा टू गेट दैट निटेड इफेक्ट। तो वो सब करा। आई रिमेंबर I had to it in the 90s when I was going to Ludhiana. So I was such a young girl and we only wore Western clothes or whatever, jeans and tops. Whatever the fashion is today is actually that day's fashion. In reality, वापस आ गया है। तो I was married also young but not 16. And I remember my mother was like, तुम लुधियाना जा रहे हो? You can't go like this. First they sent a maid with me, then they sent me in a salwar suit, and I had none. That was one sukki si thing. So I borrowed my mother-in-law's and I went. And there they looked down on me in Ludhiana. They said, "Tusi abroad nahi gaye ho?" I'm like, "What?" Yeah, like why? It was very important for me to look Western. अच्छा. So from that day to today, India, we've come a long way, where we wear Indian clothes with pride. Absolutely. Where we want to be in Indian clothes, where Indian clothes are equally fashionable, whether you opt to be in a sari or in a Western outfit. It is no more a stigma. At that time, it sort of divided the urban from the traditional, I would say, or the new urbane, as we say it. Yeah. But I quite agree with Rina when she says that we've come a long way when it comes to Indian fashion and Indian clothes. Let's look at Natasha Poonawalla. Yeah. At the Met Gala. I've been supporting the sari. It takes a lot of courage to do it, but she did it. And we have arrived. We really, truly have arrived. No, Indian, but a little bit of अंजुल आपके बारे में अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पर वो क्लास सीलिंग होती थी कि वर्किंग मदर्स, वो मॉम शेमिंग होती है कि वर्किंग मदर्स अच्छी माँ नहीं बन सकती हैं। मॉम शेमिंग तो हर घर में हर माँ के साथ होगी। पर कहीं ना कहीं हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो औरत होती है ना, वो अग्नि स्त्री होती है। उसको हर काम के ऊपर कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आप घर से आप जिस दिन डिसाइड करोगे शादी के बाद आपने काम करना है, आपको तब भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको तब भी पूछा जाएगा कि क्या आप दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। औरत अग्नि स्त्री होती है। अग्नि स्त्री तो होती है 100%, और हर औरत होती है। हर औरत को ये पता होता है कि वो कैसे सब कुछ बैलेंस कर सकती है।
औरत से ज़्यादा ये काम कोई नहीं जानता। शायद हम अपने बच्चों में, अपने बेटों में ये इनकलकेट कर सकते हैं कि कैसे बैलेंसिंग करनी है, लेकिन स्त्री के अंदर जितनी बैलेंसिंग होती है मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान में हो सकती है। आपकी भी कोई अग्नि परीक्षा होगी, मतलब सीता को भी अग्नि परीक्षा करनी पड़ी रीना? रोज होती है, रोज होती है। मैंने कहा एक औरत को तो हर रोज हर जगह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। पर आई थिंक जो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है कि जब मेरा काम बहुत बड़ा या फैला हुआ था एक टाइम पे, और वो जैसे मेरे वर्क करियर की पीक भी थी, और फैशन उस टाइम हर जगह से तुम्हें खींच रहा था। तब उससे पहले शाहरुख खान वगैरह और मिस ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड नहीं बने थे, वो डांस नहीं कर रहे थे इंटरनेशनली। हमें कोई साउथ अफ्रीका बुला रहे, नई नॉवल चीज़ खुली थी इंडियन फैशन, तो दे वर इन्वाइटिंग अस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई रियली डिड ट्रैवल द वर्ल्ड, बट माई चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल। द फर्स्ट वन आई कैरीड अलॉन्ग, द सेकेंड वन I just couldn't take 2 boys, but मेरे अंदर में जो वो एक पेरेंट की एंग्जाइटी होती है, यू नो, सेपरेशन एंग्जाइटी, आई थिंक सुबह अगर निकलो उठ के तो वो 3:30-4 बजे तक मैं बहुत एंक्शियस होती थी। एंड आई रिमेंबर उस टाइम अगर मैंने खाना नहीं, मैंने बहुत रिसर्च करी, व्हाई डू आई बिहेव बैडली इन दैट टाइम, आई कांट हैंडल एनी टफ सिचुएशन, आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ आइदर इन टीयर्स और स्क्रीमिंग एट समवन। आई कैन हैंडल दैट सेम सिचुएशन विदाउट स्क्रीमिंग, बट मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही थी? बिकॉज आई रियलाइज आई हैड सिवियर सेपरेशन एंग्जाइटी, और आई नेवर अलाउड माई सेल्फ टू गेट हंग्री। तो मैं डाइट्स के लिए इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि नहीं करो डाइट प्लीज़, बिकॉज काम करती हुई औरत के लिए दैट मोमेंट ऑफ इमोशन इज़ वेरी हार्ड टू handle, what they call hangry. Hangry. But which is what my next topic is, body shaming, क्योंकि especially आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि आप thin models promote करते हैं, you know, fashion which only slimmer people than me can wear. So that's not true. मैं as a brand बिल्कुल नहीं promote करती. We have to learn to enjoy the body we have been given. Please learn to respect what you have. Remember, there are a lot of people in this world who may not have legs, who may not have arms. What is there if you are 4 kgs extra somewhere? It really doesn't matter. Enjoy your body. मैं as a rule by the company, मैं allow नहीं करती हूँ कि कोई भी मॉडल हमारा मीडियम से नीचे हो. I make that very clear कि small and medium के बीच में होना चाहिए. Because there is this notion कि बड़ी बॉडी के ऊपर कपड़ा अच्छा नहीं लगता. Which is not true, which is really not true. रीना, आप थोड़ा अग्नि परीक्षा, पहले तो आप बताइए, हम बात कर रहे थे लार्ज साइज के, ये बॉडी शेमिंग जो चल रही थी आपकी इंडस्ट्री में, उसमें आई नो यू हैव अ लार्ज साइज स्टोर आल्सो फॉर फैशन. यस. सो दरअसल जब हम आए थे फैशन में टू बी अ सैम्पल साइज, तब हमारे वर्ल्ड में एक सैम्पल साइज था. अच्छा. वो एक उसका एक पुतला डमी बनती है, वो सैम्पल पे हमारा वर्ल्ड पूरा डमी, टेलर, हम सब उसी के ऊपर सजा रहे हैं उसे फॉर अ शो, और वो पहना जाता है फ्रॉम अ मॉडल. इनफैक्ट उन दिनों में एक मॉडल को बोलना यू आर नॉट फिटिंग इज लाइक शी मे हैव इट्स द वर्ल्ड्स, उसको व्हाट शी हैज एनकाउंटर्ड विद आवर सिंपल रिमार्क वी कैन नॉट इवन फैथम. लाइक उसको बेचार, so many of them have suffered acutely because of these remarks कि this is not fitting you, your hips are not going, is not going up your hips. तो उन दिनों में हमने बहुत ड्रामा और नखरा करा. I have to admit, it was what the world then there was a fixed notion. We were definitely very biased people on size, fashion as an industry. It is wrong to say we were not. And sample size was the norm, and you had to be there, and the girls were to be that hanger, and the catwalk was important. शक्ल वकल बॉलीवुड वगैरह बाद में बना है. और फिर उसके बाद मैं लंदन फैशन वीक कर रही हूँ. ठंड है, जनवरी फरवरी में बहुत बर्फ़ होती है. वहाँ पर लड़कियाँ फिश नेट्स में, पुलिस आई हुई है, प्लस साइज़ क्या प्लस 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 साइज़ की, लुकिंग गॉर्जस, और वहाँ पुलिस के साथ डांस और अपना शो कर रहे हैं. उस दिन मैंने सीखा what I'm doing is wrong. This is the world and this is a fair play. And I remember आज एक बहुत बड़ी super model है, her name is Sakshi. I pulled her out from a crowd like you girls. She was a blogger. I said you have to come. I was casting for my plus size show for Lakme Fashion Week for all. And मैंने कहा तुम आओ, तुम भागे आओ. She was not going to come. Today she has done more covers on every Indian big fashion magazine than any Indian model has ever. तो ऐसे world has changed today.
it is all about equality. चाहे gender हो, gender में we were all very fluid in fashion. I must say we were very fair. We were very inclusive. There was no issue. But in size we were biased. But today it is not there. I also, as a brand on the rack, never have a small size. Our Yes, size is it is small very with embarrassing कि medium. salesperson के पास बोलो भाई ये तो fit नहीं Fit आता नहीं है, आता. So XL we कहाँ है? start with a medium. We don't start with a small. रीना थोड़ा सा bit if it's a personal जो हुआ Yes, था, लेकिन yeah. if you could share your story since you also you know About woman cancer, icon, हाँ. your battle with it and what you went through थोड़ा. So cancer girls, I thought, because I have no genes of cancer fortunately, and my family, touch wood, till now from my grandmother, all have no history ever of cancer in any generation. So I never thought it would happen to me. But I don't know what it is, whether it is my lifestyle, because lack of sleep, children, stress, work, running from one city to other, those एक तरफ हम factories में literally I become like a worker. I feel I'm one of them. So I'm not wrong when I say Agnistri. Yeah, I do all the work. I'll even plug, I'll clean, I do Really? everything. Yeah, and then suddenly we are thrown into this world, which is what I try to then do. I don't take it seriously. That's about it. Because my real work, I feel, is where we are behind the scenes. And but yeah, cancer comes as a big shock. Whoever deals with it, the first part is the shock. Okay, why is it happening to me? It's not meant to happen to me. But it's not a एकदम से होने वाली चीज़. It's not like the closest I'd been to a hospital or a doctor was when my children were born. मेरे को तो कोई बुखार भी नहीं हुआ था. मैं अपने आप को मतलब फिट रखते हैं. हाँ, मतलब काम पे रहने के साथ I was like, I felt I could do anything. If I can do work in fashion, I can do anything. It's what I thought. It pretty much toughens you up for a lot of health. So much for saying fashion is glossy magazines. ये तो मेरे लिए eye opener है. Yes. That's not true. आपका वर्ल्ड भी इतना ही मुश्किल है because it's deadline driven and We all are on that deadline. Yeah. Deadline means dead. मरना पड़ता है पहले. Literally it says dead पहले. Without मरे that line won't cross. And so cancer came there and so I'm a Buddhist now. I chant. So I know in India many people practice Buddhism, but you have to deal with it. Like I have seen cancer ka bimari is not such a hassle. It is a treatment which is killer. Then the treatment is like the world's biggest shop you've ever been into. Cancer shop, because you have so many doctors, you have so many stages in curing the cancer and its treatment that it's one hell of a shop. But yes, mentally it is a lot of work, cancer, because you're really with the fear of death here and you face it. It's better to be surprised by it and go. But having said that, you also have been talking about preventive health checkups. Ji, preventive health checkup is very important. A person like me, working, you girls, all of us are so lazy. We postpone it. We postpone it so much. Any sign you see in your body of a change, it is important to get a checkup. It's just something, because I was so surprised. How can it happen to me? But I did have a significant change in my body shape, like shakal of the skin, like a pucker. Really? That was the sign. That was my sign. And I could see it. And I'm sitting on it. I'm fully educated. I'm aware. This can mean anything. And I'm sitting and saying, okay, next show ke baad. And then I said, okay. Then my husband just pushed me in a car. And this lovely lady who's a doctor, she opened her place for me at night. फिर मैं धक्के से वहाँ पहुँची हूँ to get this news also. And then of course I'm treated. And now I'm here with you and I'm back to life. But yes, cancer is a traumatizing experience for every person. Anyone. I think the name is the biggest scare. No, it is the treatment which is horrible. Because you're poked with these jabs and like a zoo animal. And some of my friends have really had a worse deal than I have. So I've been quite fortunate. So basically the thing is, work, जैसे रीना says, है important, लेकिन work meeting नहीं करते रहिए, थोड़ा अपने आप पे भी. And women as a tendency, we
टेंड टू पुट आवरसेल्व्स पीछे Yes. कि यू नो बच्चे पहले, हस्बैंड पहले, काम पहले, अपने आप पे हम फोकस ही नहीं करते हैं। पर आज हम इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं, तो अब हम सवाल का टाइम है। सो सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। वी हैव रीना एंड अंजुल, वी हैव यंग किड्स, यू नो, कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर हियर। Lovely they are, wonderful. All girls, because this is only women show. Yes, of course. Thank you so much for such an inspiring talk, ma'am. मैम ये सेट कि आपके मोस्टली वर्कर्स विलेज एरिया से आते हैं एंड अभी भी वहाँ पर मेन चिकनकारी वर्क नहीं करते. सो हाउ डू यू सजेस्ट मैम वी कैन चेंज दैट, और लाइक शुड वी चेंज इट, एंड कैसे उसको हम कि हम दूसरे जेंडर को भी इस इंडस्ट्री में ग्राउंड लेवल पे लेकर आएँ? I like it. Give men an equal playing field. I love this question that men need to be equally placed. Well, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है क्योंकि चिकनकारी औरतें पास टाइम में करती हैं. इट इज़ समथिंग विच इज़ डन फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम. वो अपने घर का काम पूरा करेंगी, जो कुछ वो कर रही हैं वो सब कुछ करेंगी, और उसके बाद वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए चिकनकारी करती हैं. अगर आप किसी आदमी को वो चिकनकारी करने के लिए देंगे तो उसकी दिहाड़ी है, जैसे बोलते हैं. इट इज़ अ डेज लेबर, सो इज़ दैट मच मोर एक्सपेंसिव टू डू. So he would not sit there and do the embroidery. A woman is happy to do the embroidery. Next question. Ma'am, I really liked your concept of Agni Stri. What was your biggest Agni Pariksha which you had to go through? Well, as I really feel that we have to give an Agni Pariksha every day. To prove yourself every day as a woman is the biggest Pariksha which you do every day. आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको बस पकड़नी है. बस पकड़ने के लिए भी आपको अग्नि परीक्षा देनी है, ये देने के लिए कि क्यों तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है. घर से निकलते हुए भी आपको पूछना पड़ेगा. बट फॉर मी माई बिगेस्ट परीक्षा केम व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग. बट अगेन एज आई टोल्ड यू, इट केम फ्रॉम माई डॉटर वेयर आई वॉज पुश्ड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग. बट आई पर्सनली फील दैट वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लिविंग इन अ प्लेस वेयर टुडे थिंग्स हैव बिकम वेरी कन्वीनियंट. जो अग्नि परीक्षा एक गांव में लड़की को देनी पड़ती है वो शायद हमें नहीं देनी पड़ती है. तो जैसे रीना की अग्नि परीक्षा थी, that she fought her cancer, she had to, you know, leave small children behind work every day. I did not have to do all that. Yeah. I had the major support. मेरी अग्नि परीक्षा थी उन औरतों को घरों से बाहर निकालना और उन्हें सेंटर्स पे लाना और काम कराना. वो मेरी अग्नि परीक्षा थी, वो उन लड़कियों की अग्नि परीक्षा थी मेरे. बट रीना, आई हैव वन क्वेश्चन. जब आपने शुरू किया था, अब तो फैशन इज समथिंग प्राउड इंडस्ट्री टू बी इन. आपको बोला नहीं कि आप क्यों दर्जी का काम कर रही हैं? हाँ. ऐसे ये क्या आप ये रोज पूछा जाता है. दर्जी, ये मॉडलिंग इज बैड एंड यू नो तुम्हारी फोटो, एंड आई यूज्ड टू हाइड बिकॉज टू टेक अ पिक्चर वाज shaming is mild in my family. Oh my God. So I did hide and come in some magazines with Rohit Bal, and there was kind of, you know, because when you're so young, you can double as a kind of a person wearing your own product. And press was writing in papers then. It wasn't all electronic. And they were interested in us and our stories. Yes, so it was very challenging. I came once where there was a design story and I came on the cover of India Today. So there was other designers with me, Tarun, Rohit Bal. And I was so young. I wore a pin-tucked khadi ki mini skirt and my tank top with chicken curry on stretch done, and I put some jewel thing, and my husband saw it and he threw the magazine from one room to the other. What the hell are you thinking wearing this? And my mother saw it. I felt so relieved. She said, you look so nice. I was just like, finally, somebody gave me a backing on that one. A woman to a woman. And today Anjul husband बहुत खुश होंगे कि कोई चिकनकारी पहन रही है. I know. Back then, I need to dig this out. Yeah, absolutely. And my question is, annually, carbon footprint of textile industry is 1.2 billion tons. So ma'am, like inspiring figures like you, how can you promote sustainable fashion? Thank you, ma'am. Fabulous question. Absolutely, I agree. You must, this I tell you, because you talk to all the bigwigs of politics, the country's biggest men. And I put a message out, if you can, for me. I go to the biggest market, which is of textiles. It's a wholesale market here called Gandhinagar. Okay? And you have to take the metro because it's far more convenient. So I take the metro and you pass these landfill mountains. आज उनका हालत बिकॉज ऑफ द रेन पता नहीं क्या होगा. एंड फिर एक सुएज का नाला है, इतना बड़ा नाला कि फ्रॉम देयर से डबल पे, एंड इट ओवरफ्लोज लाइक अ रिवर, एंड देयर लिटिल चिल्ड्रन प्लेइंग देयर बिकॉज दे हैव नो स्पेस टू प्ले. दैट इज देयर होम, दे कांट अफोर्ड इट. एंड वहाँ पर हमारा लैंडफिल है
of this clothing industry ka waste. And I've been, every time I pass there, न्यू पॉलिटिशियन न्यू फोटो. अभी इतने साल हो गए, अपने कहा मैं इतने साल से इंडस्ट्री में, इतने साल से मैं जा रही हूँ, हर एक का वहाँ मैं पोस्टर देखती हूँ, बट किसी ने उसका उठाने का कोशिश नहीं करा है. You know, and we as design industry, you as young people, we have many things. There are now, I work now with PETA a bit, and also with recycling, go back to the grandma. Grandma knew how to do it. पुरानी साड़ी patchwork करके रज़ाई बना दी. You know, yeah, whatever they call them, taktposh. And they did all that. We have to remember that as a country, we may be the most sustainable country. Yeah, we are quite sustainable. हमारे गांव में आज भी बनियान जब तक पोचा नहीं बनती है, फेंकी नहीं जाती. Yeah. Which is a fact. So we are very sustainable. And I 100% promote sustainable fashion. For me, the biggest footprint we leave for fashion is fast fashion. We need to be very, very, हमें बहुत दिमाग लगाना इस चीज़ पे पड़ेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फेसबुक पे आपने किसी ने आपकी फ़ोटो देख ली है एक कपड़े में, आपने ख़रीदा है, उसको आप दोबारा पहन सकते हैं. इतना बड़ा पाप नहीं है कि आप उसे दोबारा पहन लेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. So please learn to use and reuse. And that's very important. One another thing I found at home, a very simple thing which you all can do is, reuse is one, pajamas. We don't need to throw in the bin for washing every day. And also now some people like me, I'm very happy, at least I'm trying in my own way, small, is that I refashion. Some client of mine has bought my old clothes, I will refashion. If we are selling a lehenga to a bride, and because we do soft colors as a thing, we always tell them that please feel free to get it back to us to change your color. We can change your color 3, 4, 5 times. At least it feels like a new outfit. See, this is what happens when women are in control of the world. They just don't do business, they do business with a heart. They think about the future. There is nurture, there is compassion, there is what we women want is a better, more caring world. And no one better than Rina Dhaka and Anjul Bhandari. Thank you so much, both of you, Thank you for this having conversation. us. Thank you. And for a very lovely audience, I think we must clap for the audience today. Thank you. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.